हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास मैट्रिक इंग्लिश का यूनिट 3.1 जिसकी एक पोम है किंग ब्रूस एंड स्पाइडर, उसकी जितनी भी एक्सरसाइज हैं एक्सरसाइज 1 to 6 वो हम सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज नंबर 1, इट्स read the poem silently and answer the following questions. Question number 1, was the king happy or unhappy? इसका आंसर है किंग वॉज अनहैप्पी। वो अनहैप्पी था इसलिए कि वो चाहता था कि वो अपने नेशन के लिए, अपने लोगों के लिए अच्छा काम करे, उनके लिए डेवलपमेंट के लिए काम करे, उनको कामयाब करे, इसीलिए वो बहुत उदास था। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट अट्रैक्टेड हिज अटेंशन एज ही वाज थिंकिंग? इसका आंसर है he was attracted from perseverance and hope of Spider, as she never gave up. 9 brave attempts were made by Spider, and it was successful on the 10th attempt. वो मुतासिर था स्पाइडर की मेहनत से, उसकी एक जो उसको होप थी, एक उम्मीद थी उससे कि वो उसने हार नहीं मानी। उसने 9 अटेम्प्ट्स किए लेकिन 10th अटेम्प्ट में वो कामयाब गई, उसने हिम्मत नहीं हारी, तो ये इस चीज से बहुत अट्रैक्ट था। नंबर 3 क्वेश्चन, व्हाट लेसन डिड ही लर्न फ्रॉम व्हाट ही सॉ? उसने क्या सीखा जब ये इसने पूरे स्पाइडर का वो सिनारियो देखा, तो उसने ये क्या सीखा इसमें से? आंसर, आफ्टर वाचिंग द स्ट्रगल मेड बाय द स्पाइडर, किंग ब्रूस changed his mind and decided not to give up because the success comes up with one's will. He learned to keep on trying till the end. जब उसने ये स्पाइडर की मेहनत देखी, उसकी उम्मीद देखी, उसकी स्ट्रगल पूरी देखी, तो उसने अपना माइंड चेंज किया। उसने फैसला किया कि वो कभी हार नहीं मानेगा, क्योंकि जो कामयाबी होती है वो इंसान की विल से, उसकी जस्तजू से ही होती है। और फिर उसने यही ट्राई किया आखिर तक। एक्सरसाइज नंबर 2, कॉलम ए हैज वर्ड्स फ्रॉम द पोम, underline these words in the poem. Column B has the meaning of these words, but they are jumbled up. Work in pairs and try and find the correct meaning of each word and write the answer in the answer column. The first one has been done as an example. अब कॉलम ए में जो वर्ड हैं वो पोम में से सिलेक्ट किए गए हैं। कॉलम बी में इनकी मीनिंग लिखी है लेकिन वो जंबल ऑर्डर में है। आपको कॉलम ए का वर्ड जो है उसकी मीनिंग बी में ढूंढनी है, फिर जो भी मीनिंग होगी उसका लेटर आपको आंसर कॉलम में लिखना है। अब नंबर फर्स्ट वर्ड जो है वो है फ्लंक। इसका जो आंसर वो ऑलरेडी फर्स्ट किया हुआ है वो है सी, इसका मतलब है 3। अब जो हम अटेम्प्ट करेंगे वो सेकंड से करेंगे। सेकंड इज मोनार्क। मोनार्क मींस, इसका जो आंसर है वो एम, और एम है मींस किंग। 3 है डीड। डीड का जो मैंने करेक्ट आंसर लिखा है वो एच, इट मींस एन एक्शन। नंबर 4 डेस्पेयर। इसका जो आंसर है वो है के, और के जो मीनिंग है वो है होपलेसनेस। नंबर 5 पॉन्डर्ड। पॉन्डर्ड की मीनिंग है वो है एन, एन मीन्स थॉट, पॉन्डर मीन्स सोचना। नंबर 6 डिवाइन। डिवाइन का जो आंसर है वो है आई, और वो आई है वर्क आउट एन आंसर। 7 इज endeavor. endeavor का आंसर है एल, इट मीन्स अटेम्प्ट। नंबर 8 sprawl. sprawl का जो आंसर है वो है ए, fall with arms and legs spread out. नंबर 9 tread. tread की जो मीनिंग है वो है एफ, walk carefully. नंबर 10 mounted. इसका जो आंसर है वो है डी, climbed मीन्स चढ़ना। 11 is toil. toil का जो करेक्ट आंसर है वो है जी, इट मीन्स वर्क हार्ड कंटिन्यूसली, लगातार मेहनत करना, toil. नंबर 12 is tumble. आंसर इज ई, fall suddenly. 13 is defied. इसका जो आंसर है वो है बी, challenged. 14 लास्ट वर्ड breast, it means J, prepare to do something difficult. तो ये थी एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 3, read the poem and find out which of the following statements are correct and which are not. For the correct statements, put a tick mark, and for incorrect ones, put a cross. After completing, compare your answer with your partner.
अब ये पोम के बारे में स्टेटमेंट्स हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है. A is already done. The poem is about a war. It is incorrect. Number B, King Bruce cared for his people. It is correct. वो अपने लोगों का ख्याल करता था. Number C, he was in a happy mood. It is incorrect. वो नाखुश था क्योंकि उसने अपनी जो बैटल्स हुई थी उसमें नाकामी उसको हुई थी, शिकस्त हुई थी. अब वो चाह रहा था कि वो कुछ बेहतरी करे. Number D, when he saw the spider, he decided to kill it. It is incorrect. वो उसको किल नहीं करना चाह रहा था, उसको मारना नहीं चाह रहा था, वो देख रहा था वो क्या कर रही है. E, the spider stayed on the ground when it slipped down. It is incorrect. Number F, after trying for some time, the spider fell weak. Correct है. बहुत दफा उसने ट्राई किया, गिर गई, फिर ऊपर चढ़ी तो वो थोड़ा कमजोर हो गई थी. G, as soon as it felt better, it went up again. जो कुछ बेहतर हुई तो वो दोबारा से ऊपर चढ़ना शुरू हुई. It is correct. H, it made more than 20 attempts. 20 attempts नहीं किए थे. It is incorrect. उसने 9 attempts किए थे. I, it moved up very slowly when it was near its home. आहिस्ता आहिस्ता वो चल रही थी, गिर रही थी, फिर आहिस्ता चल रही थी. It is correct. J, it did not succeed in reaching its home. इसका मतलब है इस स्टेटमेंट का कि वो कामयाब नहीं हुई अपने घोंसले तक, अपने जाले तक पहुंचने तक. ये है इनकरेक्ट, वो कामयाब हो गई थी. नंबर के, द किंग डिसाइडेड टू फॉलो द स्पाइडर्स एग्जाम्पल एंड ट्राई अगेन. किंग ने, बादशाह ने फैसला किया कि मैं स्पाइडर ने जो कुछ मेहनत की तो इसको देखकर मैं भी कोशिश करूंगा, हिम्मत नहीं हारूंगा. उसने ये फैसला किया. यस, इट इज करेक्ट. के इज करेक्ट. Exercise number 4. The following statements give a one-line summary of each words. Work in pairs and try to find out which statement is a summary of which words. Write the number of the words in the blank. After completing the exercise, compare your answers with another pair and make corrections where necessary. अभी जितनी भी statements हैं ये basically summary हैं. पोम में 14 स्टेंजास हैं तो ये 14 समरीज हैं. तो ये आपको ज्वाइन करनी है, फिर एक समरी होगी. अब ना वो 1 बताना है कि आपको ये किस स्टेंजा की समरी है. ये जो स्टेटमेंट है वो किस स्टेंजा की समरी है. नंबर 1, बट द स्पाइडर वेंट अप अगेन एंड दिस टाइम इट वाज जस्ट 1 foot अवे फ्रॉम इट्स होम. ये ऑलरेडी अटेम्प्ट की हुई है. ये 11 स्टेंजा की समरी है. नंबर 2, once it felt better it traveled higher although the journey was tiring. ये जो स्टेटमेंट है समरी है, स्टेंजा 8 की है. नंबर 3, King Bruce, though a king, was beginning to lose hope. ये स्टेंजा 1 की समरी है. नंबर 4, inch by inch it kept moving up and finally succeeded in reaching its home. This statement is summary of stanza 12. Number 5, the king thought that falling again and again, the spider would now give up. This is summary of 10th stanza. Number 6, the story goes that King Bruce tried again and succeeded. This statement is summary of stanza 14. Number 7, he had tried to do everything to make his people happy, but he had failed. This statement is summary of stanza 2. Number 8, it began to go up, but soon slipped down again. This statement is summary of stanza number 6. Number 9, the king realized that those who try succeed. Like the spider, he also could succeed. This statement is summary of stanza 13. Number 10, it was very far from its home, and the king could not work out how it would reach it. This statement is a summary of stanza 5. Number 11, in a state of hopelessness, he decided that he would give up. This statement is summary of stanza number 3. Number 12, again and again, it tried. It went up and slipped down 9 times. This statement is summary of stanza number 9. 13, just then a spider dropped down.
and the king looked at it to see what it would do. This statement is summary of stanza number 4. ये जो 13 statement है, ये summary है stanza number 4 की. 14. Without complaint, it ran up again, but due to weakness, it fell still lower. This 14th statement is a summary of stanza number 7. Exercise number 5. Answer the following questions. अब ये 6 क्वेश्चन हैं जिनके हमें आंसर डिस्कस करने हैं. Now let's start. Question number 1. Why was King Bruce so sad? Answer. King Robert Bruce of Scotland was so sad because he had been defeated in the battlefield. No doubt he had been crowned as a king, but the pressure of difficulties faced by him made him lose the heart. King Bruce उदास क्यों था? इसका जवाब ये है कि जो किंग ब्रूस जिसका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था वो बहुत उदास था, इसलिए कि उसको बहुत शिकस्त हुई थी जंग में. और वो नो डाउट वो किंग था, वो बादशाह था, लेकिन उसको एक परेशानी भी थी, बहुत मुश्किलात थी कि वो अपने लोगों को कैसे कामयाब करें, उनके लिए कैसे अच्छा काम करें. क्वेश्चन नंबर 2. बिफोर ही सॉ द स्पाइडर व्हाट डिड ही डिसाइड टू डू? स्पाइडर को देखने से पहले, इस एक्ट से पहले उसने क्या सोचा था, कि क्या फैसला किया कि वो क्या करेगा? आंसर. बिफोर ही सॉ द स्पाइडर he threw himself down on couch in disappointment. उससे पहले ये बहुत उदास हो गया था, उदास होकर बैठ गया था. He was stricken with grief. उसको बहुत उदासी, बहुत गम हो गया था. He thought over again and again and decided at last to give up the struggle. उसने बहुत सोचा, आखिरकार उसने फैसला किया कि वो हार मान लेगा. Question number 3. Why did King Bruce think that the spider would not be able to reach its home? King Bruce ने ये क्यों सोचा था कि स्पाइडर अपने घर तक नहीं पहुंच सकेगी, अपने जाले तक नहीं पहुंच सकेगी? Answer. King Bruce said to himself that as the spider had fallen over so many times, it must have found out that it could not reach its destination and would not make a further attempt at climbing, because in spite of his hard labor and brave efforts, it could not succeed. तो किंग ब्रूस ने क्वेश्चन नंबर 4. Did the spider climb at the same speed all the time or at a different speed? जो स्पाइडर थी वो चढ़ रही थी अपने जाले में, तो इसकी स्पीड सेम ही थी या डिफरेंट स्पीड थी बार बार? आंसर. स्पाइडर क्लाइंब एट अ डिफरेंट स्पीड. जिसकी स्पीड थी वो हर बार मुख्तलिफ थी. The spider once again fell down and it was hanging in the air, but without losing any time, it moved up again. Sometimes it went up, sometimes it fell down, sometimes its progress was fast, sometimes slow. तो जब वो गिर रही थी बार बार अपने जाले तक पहुंचने के लिए, तो वो फिर हिम्मत नहीं हार रही थी, वो स्लोली ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जा रही थी. तो उसकी जो पोजीशन थी वो हर बार डिफरेंट थी. नंबर 5. हाउ डिड ए स्पाइडर फाइनली रीच इट्स होम? आखिरकार वो किस तरह अपने जाले तक पहुंची? आंसर. द स्पाइडर वेंट ऑन गेनिंग ground slowly and surely, inch by inch. It covered the distance and it made an attempt at last moment of extreme difficulty. At last, it succeeded in getting into the cobweb. वो slowly, gradually, inch by inch, थोड़ा बहुत फासला तय करती हुई बहुत मुश्किल से ही, लेकिन आखिरकार अपने जाले तक वो पहुंच गई. Last question. Why did the king decide to try again? King ने ये क्यों फैसला किया कि वो दोबारा कोशिश करेगा? Answer. King Bruce decided to try again because he saw that the spider was very persistent and tried hard to complete her task. उसने देखा कि जो स्पाइडर थी वो कंटिन्यूसली मेहनत से अपना टास्क मुकम्मल कर रही थी. Although she suffered several failures, but she did not show any grievance on the disappointment of its fate. उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, उसको उदासी नहीं हुई, उसने हिम्मत नहीं हारी. It went on making attempt
and at last it succeed to put it into the cobweb. उसकी आखिर मेहनत के बावजूद, उसकी बहुत कोशिश के बावजूद वो अपने जाले तक आखिरकार कामयाब हो गई पहुंचने तक. This encouraged the king Bruce and he also learned the lesson of success from Spider. इस वाक़े से, इस अमल से स्पाइडर के किंग ब्रूस को एक हिम्मत मिली, जज्बा मिला और उसने ये लेसन सीखा कि कामयाबी मेहनत से ही मिलती है. एक्सरसाइज नंबर 6, ये लास्ट एक्सरसाइज है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. Details about writing a summary of poem are given in section 3.4. इस एक्सरसाइज में ये बताया गया है कि इसी यूनिट में 3.4 सेक्शन में दो पोम्स हैं. एक्सरसाइज 1 में एक पोम है लिटिल थिंग्स, एक्सरसाइज 2 में एक पोम है द मैन हु विंस. उसमें बताया गया है कि अगर लेट सपोज किसी पोम में 4 स्टैंजास हैं तो आप हर स्टैंजा की एक शॉर्ट स्टेटमेंट बनाएं और फिर अगर 4 स्टैंड बनेगी तो उनको आप ज्वाइन करेंगे तो वो एक समरी हो जाएगी. तो इसी तरह से हम अभी स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6 में भी, और हम अभी समरी लिख रहे हैं किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर. Work in pairs and write a summary of the poem. You may begin writing the summary by first giving a general introduction. This can be followed by a brief summary of all the verses. जो फर्स्ट पैराग्राफ आपका समरी का होगा उसमें आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे पोम का और ब्रीफ समरी बताएंगे पूरी पोम की. एक बिल्कुल इंट्रोडक्शन हो जाएगा ये. द वन लाइन समरी ऑफ ईच पैराग्राफ इज गिवन इन एक्सरसाइज 5. ये गलती से 5 लिखा गया है, ये एक्सरसाइज 4 में बेसिकली. तो एक्सरसाइज 4 में आप देखेंगे कि हर स्टैंडा की एक लाइन की समरी दी गई है जो हमने सॉल्व भी की है. एक्सप्लेन ईच वर्ड्स बाय एडिंग सम मोर डिटेल्स using the answers in the previous exercises. Lines 1 to 3, 4 to 8, 9 to 12, and 13 to 14 can be grouped together to form different paragraphs. अब ये जो 1 to 3 जो है लाइन्स की समरी है, स्टेटमेंट को आप ज्वाइन करके एक पैराग्राफ बनाएंगे. फिर 4 to 8 की जो समरी दी गई है उसको मिक्स आप ज्वाइन करके एक पैराग्राफ में लिखेंगे. फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ होगा उसमें 9 to 12 जो स्टैंडा है उनकी आप समरीज लिखेंगे और जो नेक्स्ट आपका पैराग्राफ होगा उसमें 13 to 14 लिखेंगे. Can be grouped together to form different paragraph. The final paragraph should have the conclusion and moral of the story. जो आपका लास्ट पैराग्राफ होगा उसमें आप पोम का मोरल कंक्लूजन दोनों लिखेंगे. You may begin as follow. आपकी जो समरी होगी वो आप स्टार्ट करेंगे. The poem King Bruce and the Spider is written by Eliza Cook. It tells us how. अब देखें मैंने ये पूरी समरी लिखी है, सॉल्व की है और ये देख सकते हैं आप इसमें मैंने डिफरेंट कलर्स दिए हैं. डिफरेंट कलर्स क्यों दिए हैं? जो मैंने फर्स्ट ब्लू कलर दिया है इसमें ये इंट्रोडक्शन है पोम का. फिर जो रेड कलर है इसमें मैंने 1 to 3 लाइन्स जो है उसकी मैंने ये लिखी है समरी. उसके बाद जो ब्लैक कलर है वो मैंने 4 to 8 लाइन्स जो वर्सेस हैं उनकी मैंने समरी लिखी है. फिर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें मैंने 9 to 12 लिखा है ब्लू कलर का. फिर आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में 13 to 14 जो लाइन्स हैं इस पैराग्राफ में मैंने इसकी समरी लिखी है. और जो लास्ट पैराग्राफ है जो है उसमें मैंने कंक्लूजन एंड मोरल लिखा है इस पोम का. तो ये बेसिकली समरी मैंने डिफरेंट पैराग्राफ में डिफरेंट कलर्स शो किए ताकि आपको ये मालूम हो कि एक इंट्रोडक्शन है और जो नेक्स्ट पैराग्राफ है 1 to 3 वर्सेस की समरी है, फिर 4 to 8, फिर 9 to 12, फिर 13 to 14 और जो लास्ट पैराग्राफ है वो कंक्लूजन एंड मोरल ऑफ पोम. तो इस तरह अब मैं आपको समरी पढ़ के बताता हूँ. किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर इज रिटन बाय एलिजा कुक. It tells us how one should not lose his heart if he fails in his struggles once or more. He should continue his struggle till success. King Bruce, though a king, was beginning to lose hope. He had tried to do everything to make his people happy, but he had failed. In a state of hopelessness, he decided that he would give up. Just then, a spider dropped down, and the king looked at it to see what it would do. It was very far from its home, and the king could not work out how it would reach it. It began to go up, but soon slipped down again. Without complaint,
It ran up again, but due to weakness, it fell still lower. Once it felt better, it traveled higher, although the journey was tiring. Again and again it tried. It went up and slipped down 9 times. The king thought that falling again and again, the spider would not give up. But the spider went up again, and this time it was just 1 foot. Inch by inch, it kept moving up and finally succeeded in reaching its home. The king realized that those who try succeed. Like the spider, he could also succeed. The story goes that King Bruce tried again and succeeded. This poem teaches us that we should not be disappointed and discouraged by unfavorable circumstances. We should keep on trying again in spite of failures. We should not forget that failures are the pillars to success. अब इस पोम किंग ब्रूस एंड स्पाइडर जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग पोम है, इससे हमने ये सीखा इस पोम से और स्पाइडर के एक्ट से कि कभी भी हमें मायूस नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए, चाहे हम क्यों ना नाकाम हो जाए लेकिन फिर हम दोबारा कोशिश करनी चाहिए। आखिरकार एक ऐसा वक्त आएगा कि हमें कामयाबी हासिल होगी। सो वी शुड नेवर गिव अप। तो ये समर थी इस पोम की। उम्मीद है जो मैंने एक्सरसाइज 1 to 6 सॉल्व की किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बता सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।